हेलो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आज पाइथन लर्निंग में। मैं फ्रीकोड कैंप का इंट्रोडक्शन टू पाइथन जो कोर्स है वो उसमें से पढ़ रहा हूँ। यहाँ मैंने कर्सर यूज़ किया हुआ है, कर्सर एडिटर, और उसमें मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। सो अभी तक का सफ़र ये है कि मैंने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम और लोगों को भी जोड़े जिनको अभी पाइथन लर्न करना है। पाइथन मैंने पहले यूज़ किया हुआ है लेकिन आई नेवर वेंट इनटू डिटेल। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लाइक मैंने कोई प्रोग्राम ज़्यादा नहीं बनाया, मैंने जस्ट क्विज़ेस किए हैं। तो इस बार मैं थोड़ा और फोकस करने वाला हूँ इस पर, और मेरा टारगेट है कि मैं पाइथन सर्टिफिकेशन फ्री कोड कैंप से ले लूँ। सो लेट्स डाइव इन। सो आई थिंक मैं 1 घंटे तक का ये सेशन रखूँगा, और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो जस्ट जॉइन इट एंड study with me, coding with me. Let's keep coding. So, कहाँ तक था मैं? Yeah. While other are immutable data types can't be modified or altered once they are declared. You can point their variable at something new, which is called reassignment, but you can't change the original object itself by adding, removing, replacing any of its elements. String, integer, float, boolean, tuple, range. हाँ, मतलब इनका ये है कि भाई ये सारा सब immutable है. Like you can't change this. Like if I type here greetings, greetings, hello. ओके चलो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ अभी. ई आएगा ना भाई. ओके, तो आई कैन चेंज greeting message, और if I want to change a character or first character को मैंने चेंज करना है तो you try to change the value of the first element. कर्सर मुझे सजेशन दे रहा है कि लाइक मैंने जो आगे मैंने नोट्स लिखे उसमें मैंने थोड़ा नोट्स डाले थे एज ए कमेंट, तो कर्सर प्रेडिक्ट कर रहा है कि क्या कमेंट तो मेरे को इजी रहेगा पढ़ने के लिए. ओके, you try to change the value of the first element from h to h, small h, but it will raise an error because string is immutable. ओके, तो चलो हम इसको प्रिंट करते हैं और रन करते हैं हमारे टर्मिनल में. ओके, कहाँ गया भाई, कहाँ गया रे, इसको क्या हो गया. ओके लेट मी. ओके, क्या टाइप एरर आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. ओके गुड. तो यहाँ पे हमको टाइप एरर मिलेगा कि तुम भाई ये नहीं कर सकते. बट लेट मी सी, अगर मैंने ओके आई नीड एक्सक्लूड. ओके लेट मी. ओके, अगर आप देख रहे हैं
तो ये मेरा टर्मिनल है। अगर मैं नोड में जा रहा हूँ और अगर मैंने कोई वेरिएबल जो ओके पहले तो ये बड़ा करना पड़ेगा भाई। 10 we can okay let एक कहाँ गया रे, क्या हो रहा है? Oh wait, clear. I think something is wrong. क्या हो गया भाई? स्क्रू क्यों नहीं आ रहा है? Okay, let me do it again. Good. Let me try it again. What happened here? I don't know. Okay, let me go to node. Okay, let string hello world. ये मैंने जावास्क्रिप्ट में अपना स्ट्रिंग दिखा दिया, तो हम कंसोल लॉग str करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड मिलेगा। अगर हम इधर चेंज करते हैं h, तो let me we can change here but we don't get an error here while assigning it. Okay. Oh, we need a string replace, I think, for doing the, let me see क्या हो गया, mdn string replace. Our string method is to return new string pattern. Okay, तो दूसरा ये भाई, I can't replace, it will give me a different, the new string. इधर भी I think change नहीं हो रहा है. Okay, not a problem. Terminate. Okay, cool. So we'll comment out this one so we can't get any error. Okay. तो क्या था, कहाँ थे हम, कि हम यहाँ पे टाइप एरर आता है तो we can't, does not support item assignment. On other hand, you can change mutable types without giving them a new name. You can add, remove or update item right where they live. Oh, this is string like JavaScript में array को change कर सकते हैं, add or whatever value we can change. इधर भी आप वैसे कर सकते हैं. So yeah, you can, without giving a new name or add, remove, update items right where they live. Example are list, standard, dictionary. Okay, dictionary और list में आप change कर सकते हैं. I think I have a example here already जो मैंने use किया हुआ है कि भाई एग्जाम्पल ओके, ये रहा कि उसका पहला जो आइटम है वो मैंने चेंज कर दिया 02 आई थिंक 1.
इधर में कोई लिखना चाहिए था। ओके, नाउ ये हो गया। व्हाट एल्स वी वेयर, ओके ये हम कर सकते हैं। देन to get the data type of a variable you can use type function. Example code, my var1 is hello world, my var2 is 21, टाइप उसमें डाला है प्रिंट फंक्शन के अंदर एज आर्गुमेंट, तो उसका आ रहा है क्लास एज स्ट्रिंग, इधर आ रहा है क्लास इंटीजर, एंड हियर ऑल द डेटा टाइप्स कवर्ड इन दिस लेसन अलोंग विद देयर टाइप्स इन द टर्मिनल। भाई इसका मैं इंटीजर वर्ड एंड प्रिंट इंटीजर, like print function में you can use comma to give so like different arguments, अलग अलग arguments आप डाल सकते हैं, और वो आपको like print function क्या करेगा, like integer space my integer का जो वैल्यू होगा वो और ऐसे प्रिंट करेगा। like this। I think we'll do it like should I make a note for this? I'll make a note for this only। मैंने इसके लिए नोट बनाया। ओके type function use to get type of a variable। okay, I think I'll use this example। I will use this। okay, 10 हो गया कि भाई मैं हेलो भाई। Why not, let's write। अपने को मिल रहा है कि ये एग्जांपल दे रहा है, तो देखते हैं क्या क्या अलग अलग किस्म के टाइप आ रहे हैं। ओके, नाउ लेट मी डू इट। ओके, लेट्स सी क्या बोल रहा है ये। What is this one? टाइप इंटीरियर है, ये क्यों है? Let me see why type int Python
Beautiful forever happy। यार आगे जाके देखते क्या होता है। ये क्यों मेरे को ऐसे सजेस्ट कर रहा है? Let me see. Type my web 6। अपने आप ही आ रहा है। Type object type name is type new type। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। Let us see। टर्मिनल में भी ऐसा है तो देखते हैं फिर। Python 3 ओके। ये मैंने किया प्रिंट टाइप my 6। ओके इसमें नहीं आ रहा है। आई थिंक कर्सर का है कुछ, लग रहा है कि भाई yep I don't want it right now। I think it's giving the type already कि कौन सा टाइप का लिस्ट है। एंड इधर वो डिक्शनरी में बोल रहा है कि जो की वैल्यू पैर है उसमें इंटीजर की एंड स्ट्रिंग वैल्यू है। और इधर भी सेट में भी कौन सा सेट है, लाइक इंटीजर सेट है। तो या दैट मेक्स सेंस बट आई एम नॉट श्योर क्यों आ रहा है। सो विल रीड मोर अबाउट इट लेटर। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन। सो आई थिंक this is we are clear, we can go through if you want to, but I think this is enough for me to move ahead. Let me commit something. Status can't take the status by either go. Okay. Make notes for type checking। Status clear। okay now let me see what is it। another way to check the type variable is used to built-in is instance function। it's not like a JavaScript camel case, it's just a is instance function which check if a variable matches a specific data type, takes an object and type you want to check it against। so hello string true, okay it will give you boolean value, it returns a boolean। okay let's see। is instant is a function used to check if a variable is a specific type and it return true or false boolean। okay string okay अभी no I think I will say like print is instant pay। one
be false, right? True, false. Okay. True, false. Oh, got that. Okay. I will delete it. So इसमें क्या एग्जांपल दिए? is instance is a hello world. ये string होना चाहिए. This will return a true. Is instance is a true boolean true. Is instance 42 integer true. Is instance John Doe int false. Let's try one more thing. I'm going to say print is instant. अभी मेरे को नहीं पता क्या करना है, लेकिन what I'll do here, I'll use true here and जो मैंने अभी define नहीं किया and bool. देखते क्या print हो रहा है. Let me see. Okay, name error. True is not defined. You'll get a name error. True is not defined, which is a keyword. Oh. True, I think true is a small data में लिखा हुआ है. That's a keyword for the. Okay, got it. Okay, although Python is dynamically typed, you can still add type hint. Okay, these are optional signals that tell other developer what the data type of a variable or function is expected to be. Here is a quick example of variable types. Okay, उसके बाद string like a TypeScript में string लगा के John Doe. Got it. Good. Optional signals. Optional signals. In Python to tell type it. Type hinting के भाई. Oh, sorry, गुजराती. It should be type. It's उसको type hinting बोलते हैं. Okay. Like a TypeScript definition, I think this is function add a integer b integer, which is giving the integer as a return a plus b. Print add 1 2 3 is equal to 2.0. Error because 2.0 is not an integer. True not an integer. True is a boolean. None is a none type. This is the least type, that's why. Okay, good. It's like a TypeScript. Okay.
बस बस भाई इधर से भी बहुत नहीं चाहिए मेरे को और इतना लिख. Okay, now let me. I'll copy those. नहीं चलो बनाते हैं कोड तो लिखो. Username str John Doe अभी user age integer 20. Okay, this is enough for that. इधर भी वही देगा कि ऐसे इसमें भी definition क्या बोलते हैं def function greet name string type string age type integer return will string return hello. Okay, I think this is kind of string concatenation. Instead of $sign we are using our just f hello name age. Okay, अगर आप जावास्क्रिप्ट से नहीं हो तो ये जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं अगर आपको ये भी नहीं पता कि फंक्शन क्या है तो आई थिंक यू विल आगे जाके मेक सेंस करेगा कि इसमें जो नेम जो डायनेमिकली हम फंक्शन में पास कर रहे हैं वो यहाँ पे स्ट्रिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आप जावास्क्रिप्ट से हो तो लाइक फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट जो पैरामीटर पास किए हुए हैं वो हम जो $sign यूज़ करते हैं फॉर द concatenating the string value in the string. So I think this is a combination of that, which is username is string, age is integer, we are passing in the greet function username string, यूज़र एज पास किया है तो हमको रिटर्न मिलेगा हेलो. ये जॉन डो जो पास किया वो यहाँ नेम की जगह आ गया और एज की जगह आ गया 24. Not that unlike TypeScript which enforce type at compile type, Python just uses these hints for a static analysis, documentation and editor support, not for enforcing types during runtime. Readability especially in a large project. Okay, as a compiler it won't give you anything. So if I say add add function में अगर मैं यूजर नेम भी पास करूँ तो मेरे को वो लाइक स्क्विगली लाइन नहीं देगा. गिव यू क्या बोलते हैं स्क्विगली लाइन्स. at runtime. Okay, good. Then not commenting out, we'll see. Okay, तो ये आपको स्क्विगल लाइन नहीं देगा, जस्ट गिव यू द रन टाइम आफ्टर टाइप एरर देगा रन टाइम में. पर but you can go into program and see what is required, क्या चाहिए. इसलिए तो चलो क्वेश्चन करते हैं. What does it mean that Python is dynamically typed? You must manually specify data type for every variable. नहीं, Python does not support different data type.
नहीं, data type based on the assigned value, assignment. What is the difference between the integer and float data types? Integer can store both positive and negative number, while floats can store positive नहीं. Integer are whole number without decimal, while floats number are decimal point. सही जवाब. Floats takes up less memory. नहीं लग रहा है मेरे को, नहीं है ये सब. How can you check the data type of a variable in a Python? By using type function like type myvar, by checking variable value manual, by using type of function like type of the I think yeah JavaScript का है, by converting variable to string and running. चलो you, बहुत बढ़िया. We'll go to next. So let me push this and we'll add note for type hinting. मैं तो मिस कर रहा हूँ, sorry. I'll try to do it. Okay, let me see what is here. Okay, I think I'm done with this. इसका नाम क्या रखूँ मैं? Strings Python. Okay, let me see. Strings in Python. Strings in Python. Okay, let's see. Then second. Okay. Good. String do I need? Let me create a file, strings.py. Okay, मैं इधर नोट्स बनाऊंगा. अगर मैं इधर नोट्स बनाऊँ, इस जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए. So how do you work with strings? A string is a sequence of characters surrounded by either single or double quotation marks. तो string तो पता है ना आपको कि quotation दो लाइक अदर्स में सिंगल कैरेक्टर, अगर सिंगल कोटेशन में यूज़ करना है तो कैरेक्टर होता है, डबल कोटेशन में यू यूज एज अ स्ट्रिंग लाइक इन जावा. मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था तभी मुझे पता चला. आई डिडंट नो दैट. आई थिंक इन C# में भी ऐसा है. तो in some programming language, characters surrounded by single quotes are treated differently than characters surrounded by double quotes, but in Python they are treated equally. So like same thing जो मैंने अभी बोला वो. So you can use either when working with strings. Here are some examples of string. My string, my str1
is equal to hello with a single quotation. My str is equal to double quotation world. If you need a multi-line string, you can use triple double quotes or single quotes. Oh, that I don't know. Okay, let's see. With single quote, single quote string hello world. तो इधर सिंगल कोट हो गया. Okay, I think I need this space with the double quote. Double quote string hello world with double. ये हो गया हमारा डबल कोट for multi-line. For multi-lining string, use triple quotes. This one, okay. I think okay, this one. Ay, क्या हो रहा है इसको? वो टैब लेना सॉरी. तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हो गया ये ट्रिपल कोट के साथ हमने हेलो वर्ल्ड डाला. फिर हमने जो करना है क्लिक, यू विल एंटर, देन यू विल गो टू नेक्स्ट लाइन, देन यू आपने एंटर हिट किया, फिर आप नेक्स्ट लाइन में जाओगे, वहाँ पे आप नाम क्लेम करोगे, स्ट्रिंग लिखोगे, दैट्स इट. Okay. If you need a multi-line string, you can use triple, double quote or single quote. If your string contain either single or double quotation mark, then you have two options. Use the opposite kind of quotes. That is, if your string containing single quote, use double quote to wrap the string and vice versa. अच्छा, it's हुआ तो वाइस वर्सा कर सकते हैं. ऑपोजिट काइंड ऑफ, यहाँ पे जैसे सिंगल कोट है तो हमने डबल कोट भी यूज़ किया है आउटसाइड पर. और एस्केप द सिंगल और डबल कोटेशन और स्लैश बैक स्लैश करके वो आप यूज़ कर सकते हो if you are using the same quotation. You can also combine multiple string together, plus. Okay, that's a quotation. चलो अभी ये इसका भी बना देते हैं. क्या बोल रहा है? if string contain single or double the code to define the string.
Okay, and he said hello world. Okay, got it. Or we can use escape character to escape the port. मेरे को टाइप करने दो भाई. Single quotation string is फिर double quotation mark hello world, फिर बैकलैश, फिर डबल कोटेशन, फिर आएगा हमारा ओके. You can also combine string concatenation, I think. First name John, last name John. Okay, मेरे को जो आया ना था वो ये आ गया. फिर पढ़ दे इसमें से. Okay, you can also combine string together with a plus operator. तो हमने यहाँ पे plus operator यूज़ किया है. John Doe plus plus space फिर डाला last name तो print full name हो गया John Doe. और अगर string but note that this only works with the string. If you try to concatenate string with a number, you will get a type error. Okay. But in JavaScript you can do that, like it will course क्या बोलते हैं उसको, course the type and convert it into suitable data type. Python does not automatically convert the other type data like integer into string when you concatenate them. Python requires all elements to be string before it can concatenate them. To fix that, you can convert the number into string with the built-in function string function. Okay. Name is equal to John Doe 826, name and age, name plus str, print name and age, John Doe 26. You can also use a augmented assignment operator to concatenation. This is represented by a plus or equal sign and perform both and assignment in a one step. Okay, name and age plus or minus the age as a string. Okay. Plus or minus. Regular strings also have a category of string called f strings, which is short form of format data string. It allows you to handle interpolation and also do some concatenation with a compact and readable syntax. I think guys, I'm gonna take a break here. Maybe we'll join for another session next time. Till time, keep learning, keep coding. See you. Bye.